Okay. So force on current carrying conductor in a magnetic field and its application in DC motor. So what we had studied that whenever there is an electric current passing through a conducting wire, we experience a magnetic field. Okay. Now we are going to do some more thing on this. Okay. So there is a current carrying conductor and there is a magnetic field. So ऐसे सोचो, there is a current carrying conductor in a magnetic field. Okay. When you are having a conductor and it is passing, the current is passing through that conductor, and the same thing, that same setup is there in a magnetic field, that conductor will experience a force. Okay, मतलब उसको एक झटका लगेगा. Are you understanding what I'm trying to say? So Yes, ma'am. a conductor, when a current is flowing through that conductor in presence of magnetic field, that conductor is going to experience a force. That principle we are going to study in B part. Okay, so Lorentz found that a charge moving in a magnetic field in a direction other than the direction of magnetic field, like for example, annotate करती हूँ. Now if this is the direction of magnetic field, okay, and the charge is moving in a direction other than the direction of magnetic field, then this conductor will experience a force, and this force is called Lorentz force. Okay, so Lorentz was a scientist, he had found this. Okay, so whenever a charge ka matlab the current, so whenever current or charge is moving in a magnetic field other than the direction of magnetic field, okay, then it experiences a force, and that force is called Lorentz force. Now since charge in motion constitutes a current, therefore a conductor carrying moving charge placed in a magnetic field in direction other than the direction of magnetic field will also experience a force and can produce motion in the conductor. What is the meaning of experiencing a force? That means the conductor is going to move. मतलब force लगाओगे तो क्या होगा? There will be some motion, so there will be a motion in that conductor. समझा आपको? Fine. So how it is done? तो देखते हैं the experiment. So let's read first and then I'll show you how it is experiencing, क्योंकि ये 3D में देखने में अच्छा रहेगा, तो मैंने उसका खोल के रखा हुआ है. Figure 10.222a shows a thick copper wire AC suspended at its end A and C from a support by means of thread. A magnetic field B is applied by keeping the wire AC in between the poles north and south of a horseshoe magnet with length AC normal to the magnetic field lines. मतलब मैंने अभी आपको दिखाया कि if this is my magnetic field, my conductor will be placed normal, मतलब perpendicular to the magnetic field. Okay, now between the ends of A and C of the wire, a rheostat, key and battery are connected. Why? Because I want to pass the current. If I have a battery, I have a rheostat, I can क्या बोलते हैं, change the strength of the current. Okay, the magnetic field is in the plane of the paper, जैसे मैंने आपको ऐसा दिखाया, बट यहाँ पे उन्होंने y डायरेक्शन लिया है. लेट्स सी दैट. y डायरेक्शन तो मैंने उल्टा लिया है, मैंने उसको x में लिया है, एंड द वायर लाइज इन द x डायरेक्शन, तो मैंने थोड़ा उल्टा लिया है. सो इट्स एनीवेज ओके. ओके प्रीति. ओके, तो क्या बोला अगेन आई एम सीइंग, क्या बोला उन्होंने, y डायरेक्शन में, मतलब दिस इज द डायरेक्शन, magnetic field is this way, so you can say north and south, and the current is flowing in x axis. ठीक है, so the current carrying conductor is नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है. मतलब कैसे बताऊं मैं तुमको, ये लोग ने डायग्राम तो दिखाया, लेट मी शो यू. ये ना मैं हमेशा करके दिखाती हूँ. आई एम जस्ट थिंकिंग. तो ये अभी नॉर्थ है, वो साउथ है. ओके, तो नॉर्थ एंड साउथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई एक्सिस. ओके, एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन दी नॉर्मल, मतलब उसके स्ट्रेट लाइन में ऐसे कर दो. ओके, मतलब बीच में है. नाउ व्हेन द करंट फ्लोज, ओके, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. फोर्स का मतलब क्या है, कोई आइडिया देगा क्या, व्हाट इज हैपनिंग? द कंडक्टर विल फ्लो दिस साइड और द कंडक्टर विल फ्लो आउटसाइड. मतलब ऐसे सोचो
दिस कंडक्टर, ये जो है ना, ये कंडक्टर है, सोचो यहाँ पे जो बीच में ये कंडक्टर दिख रहा है, यहाँ पे ये कंडक्टर है, द करंट कंडक्टर विल फ्लो इनसाइड द पेपर और आउटसाइड द पेपर, मतलब एक हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है और या बुक के अंदर जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन विच द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. सीरियसली Yes, यू ma'am. अंडरस्टूड? सच में एवरीवन अंडरस्टूड? I'll नहीं be मैम, surprised. I'll be मेरे को ये surprised. डायरेक्शन वाला नहीं समझा. Okay, again I'm drawing. Okay, can you see? देखो, the magnetic field is from y-axis. मतलब सोचो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यदि समझ गया ना तो माय गॉड मैं सरप्राइज ही हो जाती हूँ. So if this is north, okay, मतलब there is a horseshoe magnet. So north से south the magnetic field is given. Now in between the magnetic field the conductor is placed. So this is my conductor. Okay. Now this conductor, when the current is flowing through this conductor, the conductor is experiencing a force. The force का direction is going to be either it will be inside, मतलब अंदर की तरफ. Okay, imagine a 3D or it is outside. ये दिख रहा है Z दिख रहा है आपको? Can you see Z? Yes ma'am. हाँ, so either the conductor is going to come inside or going outside. Okay, let me give you just 1 second. ना मैं वीडियो खोलती हूँ फिर. Just 1 second. मैम तो एक्सपेरिमेंट में प्रूव क्या करना है? कुछ नहीं, that current carrying conductor in presence of a magnetic field is experiencing a force. That's it. यही प्रूव करना है तुमको. Okay, एक मिनट. आता है क्या एग्जाम में मैम? No, nothing comes. ये सिर्फ समझना है आपको. Okay, so let's just okay, so what rule it follows? So देखो, पहले एक पढ़ लेते हैं and then I'll go back to this. So when no current flows in the wire, there is no force. Okay, when the current is passed in the wire from A to C in the x direction, a force acts on the wire in a direction perpendicular to both the direction of current I and B. Due to the force, the conductor begins to move, okay, in outward direction. ये दिख रहा है यहाँ पे. So सोचो तुम्हारा like your magnetic field is from down, मतलब north से ऊपर south, and the conductor is from this side. The force experienced by the conductor is outside, मतलब outward direction. ये Z दिख रहा है ना, मतलब वो कंडक्टर ऐसे बाहर की तरफ हिलेगा. ठीक है, कंडक्टर का मतलब है वायर रे, एंड द वायर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, मतलब एक हल्का सा थ्रेड, मतलब थ्रेड कैसे झूला झूलते हैं ना, वैसे वैसे वो हिलता है. ओके, सो इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, सोचो मैंने उसको रिवर्स किया, करंट को उल्टा कर दिया, so what will happen? It will be going inside the direction, inward direction. So if the direction of the current through the wire is reversed, okay, what will happen? The direction of the force is also reversed. Now it moves normal to the plane of the paper in inward direction, अंदर की तरफ जाएगा. Now if you experience reverse the direction of magnetic field, अभी यहाँ पे क्या था, नॉर्थ साउथ ऐसा था ना, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ ऐसा था, उल्टा कर दिया तो ऊपर से नीचे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी रिवर्स्ड. ओके, so the direction of force will be reversed. यहाँ पे भी reverse ही होगा. Now it moves in the z direction. If the wire is short enough and is placed between the poles of magnet with its length in y direction such that the current in its is the direction parallel to the direction of the magnetic field, no force acts on the wire. वो क्या बोल रहे हैं, सोचो ये perpendicular नहीं है. If the conducting wire is kept parallel to magnetic field, then there will be no force acting. The conducting wire has to be perpendicular to the magnetic field. ठीक है, so let's see the, एक मिनट, I'll just show you the video. आपने डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर किया तो ही आवाज आएगा, वरना नहीं आएगा. वायर की मतलब तुमको जरूरत नहीं है कुछ सुनना, you have to just see the action. Can you see? ओके, यस Yes ma'am. Oh sorry, हाँ, sorry. आवाज आ रहा है लेकिन बहुत ही कम आ रहा है. आपने ईयरफोन्स पहने हैं? Can you see मैम this? मुझे तो कुछ चालू नहीं हो रहा. आवाज नहीं आ रहा मैम. You don't have to listen, you just see it, what I'm saying. Just see it, see. Can you see? So north south, Yes. I had said now. So if you observe this, you don't have to see, you have to just see the 3D. Okay, so north south मतलब ऐसा, so the magnetic field is perpendicular. Okay, fine, and the conductor is x axis, ऐसा हमने पढ़ रहे थे ना. Okay, just check it. Okay, पहले देख लो and then again I'll rewind.
ठीक है. So magnetic field is upwards, north and south. आपको दिख रहा है? At least that much you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then ठीक है. So what it said that the north will, so you can see the conducting wire is suspended by a thread, okay, in such a way it is between north and south pole of the horseshoe magnet. Okay, now you connect the ends of the wire, the conducting wire. Okay, so A and B is the rod, and the conducting wire A is connected to the positive terminal of the battery, and B is connected to the negative terminal of the battery, and it is there along with a switch. समझा मैं आपको? डाउट पूछूं? हाँ, एक बोलो. डाउट पूछूं? वो साउथ पोल पे वो रॉड कनेक्टेड है या नहीं है? No, there is no connection. So it is like a ऐसे मतलब हल्के से उसके अंदर है वो. Okay. Okay. So it is connected to a battery, and यहाँ पे rheostat तो नहीं दिख रहा है. So battery है ना key. Okay. So now you start the current. Can you see the red color? Yes, ma'am. हाँ, तो red मतलब the current has started. Okay. Yes. तुमको दिखा क्या? That rod is moving. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. फोर्स के कारण ना. हाँ. फोर्स की वजह से. मतलब if you reverse the current, it moves to the right, and when you मतलब starting में, okay, just one second. So when you start the current, जब वो भी बाहर ही है. हाँ, अभी अंदर. can you see the force experienced by the conductor? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now he is saying that when you reverse the current, मतलब उसको उल्टा किया, मतलब connection उल्टा किया, so what will happen? Can you see that he reversed the wires? Did you see? Yes, there is a reverse. So reverse किया तो क्या होगा? It will go into the other direction. Did you see that? Yes, रिवर्स मतलब कहाँ से कहाँ किया होगा? कुछ नहीं, पहले ये जो था ना A was connected to plus. Okay. Okay, मतलब So उसको now minus A किया. is connected to minus. Yes. Okay. And B is connected to plus. ऐसा उल्टा Plus, किया तो तो. दूसरी हाँ. तो दूसरी डायरेक्शन जाएगा. Yes. Okay. So now you can say when the current carrying conductor is experiencing a force, so direction of force is also reversed when the direction of the current through conductor is reversed. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now if you change the position of what? The poles. Magnetic field. Magnet. हाँ, north and south देखो तुमने change कर दिया. Then also it will be in a reverse direction. That's it. So so direction of the force on the conductor depends on the direction of current, as well as it is dependent on the direction of the magnetic field. ठीक है? So nothing, वो कुछ नया नहीं बोल रहा है. लिंक. ठीक है, I will share you with this link, but it is nothing. वही वो See, Google this is Classroom पे आप हाँ, भेजें. okay, this is the diagram. So I wanted to show you a 3D diagram. That's the reason मैंने आपको ये दिखाया, क्योंकि वो 3D आपको समझ में नहीं आ रहा है ना. Okay, कि वो inward, Yes, outward. 2D. Okay, ठीक है. Yes. Yes, ma'am. ये देखो, current and field is at 90 degree. Okay, so this we are going to study. ये कैसे होता है? Now this is called, क्या बोलते हैं इसको? Fleming's left hand rule. left hand rule. Left hand rule. तो ऐसे सोचो, left hand rule. So if you see current मतलब current को you represent with your middle finger, index finger is magnetic field, and then the thumb is going to be force. Okay, so let's read that and then we can ठीक है. I hope you understood कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. Yes. Okay, so we have already studied that yes, the magnitude of force is dependent on following three factors. It is directly proportional to the current flowing in the wire. It is directly proportional to the strength of the magnetic field. Now magnetic field is represented as B and the current is I, and it is also directly proportional to the length. मतलब जितना लंबा length रहेगा उतना the force will be more. Like बड़ा wire रहेगा, the force also will be more. So it is dependent on three factors. Therefore, what you will be writing? F is proportional to IBL. Now the proportionality will be replaced by a constant K. Okay, so whose value depends on the choice of the unit. So in SI unit, the unit of B is such that K is 1. The constant is 1. अभी ये कहाँ से निकला? You will be studying in
probably 11th and 12th, so don't worry on this case. So K is 1, therefore I can make a statement that force is equal to current into magnetic field into the length of the wire. So what is going to be the unit of magnetic field? Magnetic field is represented as B, उसको एक तरफ रखो, it will be force upon I into L, that is Newton per ampere into meter. Length का क्या होता है? It is into meter. So the magnetic field is named as, मतलब उसका SI unit क्या रहेगा? टेस्ला. सुना होगा आपने टेस्ला, symbol T, capital Yes. T. Weber Yes. per meter square, मतलब WB per meter square. Okay, so unit of magnetic field is this. Okay, now how do you get this? Direction, मतलब ये आपको पता कैसे चलेगा that force is inward और force is outward, मतलब बाहर की तरफ. वो क्या बोल रहा था? लेफ्ट साइड और राइट साइड बोल रहा था. और हम एग्जाम में अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि when it is perpendicular, when it is perpendicular, यहाँ पे perpendicular दिख रहा है, that time the conductor is moving in the outward direction, मतलब 3D का देखो, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है. The conductor is moving in 3D. Okay, when उसको तुमने रिवर्स किया है, the current is reversed, then the conductor is moving inwards. But how will you decide? So Fleming has designed one rule. Okay, तो उसने क्या किया? Stretch the forefinger, left hand. सब लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड निकालो. Stretch the forefinger, central finger and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. Can you do that, everyone? Okay, Yes, now Yes, ma'am. okay, now understand the forefinger मतलब जो पहला वाला finger है. Okay, if the forefinger is indicating the direction of magnetic field and the central finger that is also perpendicular, that is the direction of the current, then the thumb is indicating the direction of motion of the conductor. Okay, समझ में आया? मतलब क्या होगा? Yes. द कंडक्टर, सोचो ये जो कंडक्टर ऐसा प्लेस्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं. लाइक सोचो यहाँ पे प्रीति है ना, बार बार ज्वाइन कर रही है, आई एम नॉट एबल टू. ओके, सोचो कंडक्टर इज दिस, यहाँ पे कंडक्टर है. ओके, द करंट इज फ्लोइंग, ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे सोचो. ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यहाँ पे. ओके, so accordingly in Fleming's left hand rule, तुम्हारा कंडक्टर कैसे हिलना चाहिए? The conductor will be moving in the upward direction, ऊपर की तरफ उछालेगा. You are understanding what I'm saying? वो गलत जगह डाल. हाँ, पर कौन सा साइड वाला है? हाँ वो. अरे ये देखो, if ये जो फिंगर दिख रहा है तो ना, पता चलता है. okay हाथ listen, से तो पता if चल your रहा है. सुनो, if your central finger, this is your central finger, okay, from the central finger, ये जो edge है ना, from this end, so the current is flowing from this side to this side. Okay, ऐसे flow हो रहा है. So what will happen? सोचो ये जो central finger है ना, this is your conductor. सोचो what will happen if this conductor is placed in the magnetic field, the north and south, मतलब basically तुम्हारा north south किधर होगा? So this is going to be your, हाँ, this is going to be your north and this is going to be your south. Okay, सोचो इसके बीच में वो तुम्हारा central finger है. So the central finger will be experiencing a force. Central finger को एक force experience होगा, ऊपर की तरफ तुम्हारा उंगली उछलेगा, ऐसा सोचो. Did you understand? Yes, ma'am. Others? आपने बाहर देखा कितनी बारिश गिरी? That's okay. मैम एक क्वेश्चन दिखाओ ना इस पे. हाँ, एक क्वेश्चन दिखाओ ना इस पे मैम. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता. अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं आता. You have to just understand this. इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं आता. जैसे कि वो I will tell you which type of question, but इसमें कुछ question नहीं आता, so don't think on that perspective. Okay, now this principle is followed in DC motors. DC motors कहाँ चलता है? ये question आता है कि gadgets, what are the gadgets? Like fan, आपके घर पे fan चल रहा है, washing machine, juicer, mixer, grinder. Now there is a electric motor which is used to produce rotational motion by the use of electricity. So an electric motor is a device which converts the electrical energy into mechanical energy using this principle. मतलब क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा? What is the principle of a DC motor? So DC motor का principle है, DC motor works on the principle that when an electric current is passed through a conductor which is placed normally in the magnetic field, the conductor is experiencing a force. Okay, therefore the mechanical energy is obtained. Are you able to understand? कि आपने करंट पास किया, सुनो, आपने करंट पास किया और देखो फैन की ब्लेड्स मूव हो रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी.
समझ में आ रहा है ये? Yes. तो डीसी मोटर का व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइस? The purpose of this device is converting the electrical energy Electrical into energy to mechanical energy. And what is the principle behind this? The principle behind this, force on current carrying conductor. मैं बताती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है. I'll show you. ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा हुआ है. You can study from that. Okay, यहाँ पे Difference between AC. हाँ, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी नहीं है. दैट इज डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. ये देखो यहाँ पे ये आता है एग्जाम में, समझा अथर्व? ये देखो, AC generator works on the principle of electromagnetic induction. DC motor works on the principle of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ये आता है क्वेश्चन पेपर में. So what is the मैम purpose of? डाउट था मेरा, हाँ, ये जो पिछला चैप्टर था उसमें ट्रांसफार्मर नहीं है ना? नहीं है, इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर नहीं है. नहीं, इस नहीं, वो पहले वाले चैप्टर में, पोर्शन में नहीं है ना? पहले वाले चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर है. ये देखो ट्रांसफार्मर. अच्छा ओके, नहीं पोर्शन में नहीं है ना? नहीं है. ओके, समझा आपको सबको? Yes, ma'am. ओके, कहाँ पे है हम? ओके, सो हमने ये पढ़ा. सो वी डोंट हैव द वर्किंग बट आई विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ओके, एग्जाम में डायग्राम भी नहीं है, so अथर्व you got saved. Okay, now what are the main parts of the DC motor? So if you can observe, there is an armature coil. कहाँ पे armature coil? If you see A, B, C, D, the blue color rectangular, that is the armature coil. Okay, there is an axle. Axle मतलब सोचो एक पाइप है, पाइप के ऊपर like this coil is wound. Okay, पाइप के ऊपर एक ये है, like for example I'll tell you ऐसा है, like ये है तुम्हारा आर्मेचर. ओके, ऐसा एक रॉड है, उसके ऊपर there is a soft iron core kept ऐसा. ओके, प्रीति. ओके, and in this side में, okay, let me show you, just one second, हाँ. एक मिनट. हाँ, okay, so can we join back? Okay, ma'am. Okay, ma'am.